Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 22nd lecture of this series of Indian Evidence Act. In this lecture we would start with section 65 and by this the cardinal principles we would get over and we would start the new topic in the another lecture. Let's see section 65. When the secondary evidence can be given. Secondary evidences may be given of the existence, condition or contents of a document in the following cases. अब इसके बाद they are giving the examples where the secondary evidence can be given, and in the last you will find that what kind of secondary evidence can be given. अब secondary evidence कब दे सकते हो उसके circumstances आपको याद करने पड़ेंगे और लास्ट में लिखा है कि किस तरह के secondary evidence आप दे सकते हो. When the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of or not subject to the process of the court, or of any person legally bound to produce it. Legally bound to produce it, but here not produced it. And when after the notice mentioned in section 66 such person does not produce it. अब मान लो a suit between A and B. A has to produce a document. A has to produce a document against B. A को B के खिलाफ एक document produce करना है. But the document is not in the possession of A. It is in the possession of B. या फिर it is in the possession of some third person C. अब मान लो third person is such who is not subject to the process of the court. मान लो वो इंडिया से कहीं बाहर रहता है और उसको डायरेक्टली आप सम्मन करके नहीं बुला सकते. Not subject to the process of the court means what? He cannot be summoned directly to appear into the court. या फिर maybe who is within the process of the court and who is legally bound to produce the document. But section 66 में section 66 आप पढ़ लीजिएगा. section 66 में ऐसे केसेस हैं जहाँ पर parties are legally bound to produce the documents. तो आप उसको नोटिस सर्व कर सकते हो और नोटिस सर्व करने के बाद भी वो अगर और वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करता, then in that case you can go for secondary evidence. Now suppose one original document signed between A and B. Now suppose the original document is with B and the photocopy of that is with A. The original contract is with B and photocopy is with A. And if A wants to prove the fact against B and if he wants to submit the photocopy, that is the secondary evidence. If he wants to submit the photocopy, that is the secondary evidence, and this will be allowed to only if to produce. This will allow only if to produce if the original document is in the possession of B and he is not producing it, or the original document is in the possession of some C who is the out of the process of the court, out of the domain of the process of the court. Process matlab someone etc. Or if it is in the possession of some person D who is bound to produce the document in the court, but despite the notice of section 66 he has not produced the document. अगर इन तीनों में से कोई एक केस प्रूव कर दो तब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो. इट विल बी अलाउड. रीड इट अगेन. When the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of or not subject to the process of the court, or of any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned in section 66 such person does not produce it. तो यहाँ पर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. अब दूसरा देखो. When the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest. अब कई बार क्या हुआ कि मान लो A और B के बीच में एक डॉक्यूमेंट था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट,
अब मान लो बाद में बी ने एक लेटर में, फॉर एग्जाम्पल बी ने एक लेटर में जो कि उसने ए को लिखा था, एक लेटर में बी ने जो ए को लिखा था इस डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को एडमिट किया है। ए और बी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और बाद में मान लो दोनों में डिस्प्यूट हो गया। अब ए ने बी को लेटर लिखा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और बी ने जवाब में लिखा कि मैं मानता हूँ, आई एग्री, कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आई एग्री दैट इन द कॉन्ट्रैक्ट दिस वाज द सब्जेक्ट मैटर एंड हैव टू गिवन द 20 लाख रुपीज सो एंड सो एंड सो। वो सब अगर वो लेटर में लिखता है। अब व्हाट इज अबाउट द लेटर, लेटर किसके बारे में था? द लेटर इज अबाउट द एडमिशन, एडमिशन ऑफ व्हाट? द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब tomorrow if there is suit between A and B, now it is not necessary that A produces the original document. He can even produce the letter in which the admission was made. अब बात तो बराबर ही है, या तो आप ये डॉक्यूमेंट प्रूव करो या फिर वो लेटर प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि लेटर में भी वो सारी चीज एडमिट कर रहा है। सो इन सच अ केस ही कैन इवन प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और इफ ही डू नॉट वांट टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, they can produce even that letter in which the B has admitted the facts. When the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest, so that document can be produced. Now see, when the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time. अब मान लो या तो ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर कहीं पर है लेकिन मैं उसको रीजनेबल टाइम में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट इज देयर समवेयर, फ्रॉम देयर आई कैन नॉट प्रोड्यूस इट इन द रीजनेबल टाइम, और उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आई एम नॉट इन फॉल्ट। अदरवाइज it is somewhere from where I cannot get it in time, then the photocopy etc. can be produced. When the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time. And next point, when the original is of such a nature as not to be easily movable. अब मान लीजिए कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट कोई मॉन्यूमेंट है, स्टोन है, उस पर कुछ लिखा है, दीवार पे कुछ लिखा है, तो अब उस दीवार को या मॉन्यूमेंट को उठाकर आप कोर्ट में कैसे लाओगे? तो उसका आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, उसका आप फोटो खींच लो, उसका आप ट्रांसक्रिप्ट बना लो। अब फोटो इज द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। अब नाउ द नेक्स्ट वन, when the original is a public document within the meaning of the section 74. अब अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार ऑफिस, उसमें से रजिस्ट्रार आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल कर नहीं देगा क्योंकि उसके पास एक ही कॉपी ओरिजिनल, एंड इट वुड बी केप्ट इन द रजिस्ट्रार ऑफिस ओनली, रिटन देयर। ही विल गिव द सर्टिफाइड कॉपी, and the certified copy in the form of secondary evidence can be filed. Now next, when the original is a document of which a certified copy is permitted by this act or by any other law in force in India to be given in evidence. अब देखो पहले वाले क्लाउज में इट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, वहां पे सर्टिफाइड कॉपी होगा। अब इन द नेक्स्ट क्लाउज देयर मे बी ए प्राइवेट डॉक्यूमेंट आल्सो वेयर द सर्टिफाइड कॉपी इज परमिसिबल, तो उस केस में भी आप ओरिजिनल की बजाय सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो। देन नेक्स्ट, व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट्स of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court, and the fact to be proved is the general result of the whole connection. अब सपोज कई बार क्या होगा, मान लो कोई मोटी किताब है, उसमें से आपको कुछ रेफर करना है, सपोज देयर इज एक्सपर्ट ओपिनियन विच यू हैव टू सोन, अब उसमें से आपको वो निकाल कर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। Now, is it necessary to produce the entire book, that this is the book? So that examination cannot be done in the court if it is complicated.
So in that case, you can go through the book wherever that book is lying, and you can do the overall inspection of the book, और उस इंस्पेक्शन का रिपोर्ट बनाकर आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, या फोटो कॉपी कराकर आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस. फिर से पढ़ लो. व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट conveniently be examined in court, and the fact to be proved is the general result of the whole collection. General result of the whole collection मीन्स आपको उस बुक का कोई एक पेज या फैक्ट नहीं चाहिए, आपको उस पूरी बुक को रीड करके उसको समराइज करके कोर्ट में प्रेजेंट करना है. द समरी ऑफ द एंटायर बुक. तो फिर आप उस बुक को कोर्ट में ले जाओ और वहां पर समरी क्रिएट करो. दैट इज नॉट पॉसिबल, and therefore a party can go and inspect the document and make a summary of that, or may an expert can do that, and that summary of the document is furnished in the court. अब उसमें बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर कुछ पेजेस हैं उसकी फोटो कॉपी करवा लो if necessary, and that will also be called a secondary evidence. अब उसके बाद देखो किस किस क्लाउज में किस किस तरीके का सेकेंडरी एविडेंस देंगे. इन क्लाउज ए सी एंड डी. अब ये में क्या था? व्हेन इट इज इन द अपोजिशन पार्टी, अपोजिट पार्टी एसेट्रा. सी क्या है? व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड. एंड डी इज व्हेन इट इज नॉट इजीली मूवेबल. इन दीज थ्री केसेस दे आर सेइंग एनी सेकेंडरी एविडेंस. एनी सेकेंडरी एविडेंस मीन्स सेक्शन 3 में जितने भी सेकेंडरी एविडेंसेस हैं उसमें से कोई भी एनी सेकेंडरी एविडेंस. आप फोटो खींच के लगा दो, आप ट्रांसक्रिप्ट बना के लगा दो, आप फोटो कॉपी लगा दो, आप ओरल अकाउंट्स दे दो कोर्ट में. either of these secondary evidence will be permissible in these three cases. अब in the case of B में क्या है? एडमिशन का. so in the case of B only the written admission is admissible. उसमें और कोई तरीके का एडमिशन अलाउड नहीं होगा, only the written admission. in the EF certified copies, only the certified copies will be allowed, and no other kind of secondary evidence is admissible. But no other kind of secondary evidence is admissible, only certified copies. In case of G, evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them and who is skilled in the examination of such documents. Means any expert can go and inspect the document, create the summary of the document, and present that summary before the court. मतलब हर केस में हर तरह का सेकेंडरी एविडेंस अलाउड नहीं होगा. सिर्फ 3 केसेस हैं जहां पर आप कोई भी सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं. बाकी के केसेस में ई और एफ में तो सर्टिफाइड कॉपीज लाओगे आप, और बी में आप रिटन एडमिशन ही अलाउ है, और जी में एक्सपर्ट समराइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. इन द ए सी एंड डी you can file any secondary evidence. By this the cardinal principle gets over, the topic cardinal principles get over. अब इसमें 65 कैपिटल A, 65 कैपिटल B और 66 you read it your own. You can read it by bare act only. They are simple ones. अब कार्डिनल प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ लिया 91 92 वाला एरिया. That documentary evidence exclude oral evidence. Then 60 वाला एरिया, that hearsay evidence should be excluded. फिर स्पेशल पावर्स, स्पेशल पावर्स में 165, then 311, then 313 we have done. Then we have seen the primary and secondary evidence, उसमें 61 till 65 और 93 से 99 तक भी कर लिया हमने. These we have discussed. अब देखो सेक्शंस क्या क्या कर लिया अब तक हमने. The meaning of evidence, the meaning of documents also we have seen. The meaning of fact in issue also we have seen. Relevant fact of broadly section 3 we have done, covered main areas. Then section 5 already covered. Then we had seen 104, 136, 165. ये सब कर लिया हमने. अब उसके अलावा section 60, section 61 till 65 and then 91 till 100. इतने सेक्शंस हमारे हो गए. So this much already we have covered. अब next lecture से we would see from section 6 onwards.
and in that we would talk about the various relevant facts. अब उसमें सीक्वेंस पूरा रहेगा आपको 6 के बाद 7, 7 में आपका लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी आ जाएगा जो RUC वाले केस में भी था, then 8 and so forth. So that's it for this lecture, and thank you for watching lecture.